Hello and welcome to Kashmir Now. I'm your host Shreya Savijay. Let's take a look at some stories of this week's episode. Ad hoc employees in illegally occupied POK threaten the government with extreme steps if regularization demands not met. People in illegally occupied Gilgit-Baltistan staged protest against subsidy cuts on wheat and load shedding. Houseboat owners in Srinagar gear up to welcome tourists during winter season. Construction work of a Panchayat Ghar is in full swing at a village in Udhampur. And later in our section of Incredible India, we will take you to witness the enthralling performances at the famous Konark Dance Festival. Be it providing basic amenities to its people or fulfilling their rightful demands, the government of illegally occupied POK, which works in cahoots with Islamabad, has always lagged behind. It is only concerned with filling its own coffers rather than doing something for the betterment of its people. As a result, time and again people have to come on the streets to demand their rights. Recently, the ad hoc employees in the region have threatened the government with extreme steps if they are denied regularization. The Committee of Ad hoc Employees in the illegally occupied POK has threatened to take extreme steps if the employees who have been ripped of their permanent government positions were not regularized again. The newly formed PTI government has brought down the act passed by the previous dispensation of regularizing ad hoc employees through an ordinance. Now the ad hoc employees are up in arms demanding their rights. In order to contain the spread of the anger, the government had earlier assured the employees of redressing their grievances in 10 days, but that too never happened. Now the employees are saying that they will launch a region-wide protest and will not give up until their demands are met. मौजूदा हुकूमत के एक ऑर्डिनेंस के जरिए दोबारा अडाप्ट करने के बाद हम सारे सरापा एहतजाज हैं। आज़ाद कश्मीर भर के अडाप्ट मुलाजमीन ने यह फैसला किया है कि हुकूमत की रोजगार कुछ पॉलिसी और अडाप्ट मुलाजमीन का जायज मुतालबा जो कि एक्ट की बहाली के हवाले से था, इसको पूरा न करने पर एहतजाज का सिलसिला आज़ाद कश्मीर भर में जिली और दारुल हुकूमत की सतह पर शुरू किया जा रहा है। यह भी फैसला किया गया है जब तक हुकूमत मुलाजमीन का जायज मुतालबा पूरा नहीं करती, उस वक्त तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। They have also threatened the administration with severe consequences if they continue to defer their issue. The leaders in the committee said that they reserve the rights over all modes of protest and are ready to make any sacrifice that their movement demanded. They have also said that it is the government and only the government which will be responsible for any mishappening or damage during the protest. मौजूदा हुकूमत ने अपनी पार्टी पॉलिसी जिसके तहत पीटीआई की हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर एक्ट हार के जरिए मुलाजमीन को मुस्तकिल किया, उसके बिल्कुल बरखिलाफ आज़ाद कश्मीर के मुलाजमीन से रोजगार छीनना सरासर जुल्म और ज्यादती है। हुकूमत ने अगर होश के नाखन न लिए तो मुलाजमीन खुदकुशियां करने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर होगी। मुलाजमीन अपने जायज मुतालबे के लिए एहतजाज के तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करने का हक महफूज रखते हैं और किसी कुर्बानी से दरेज नहीं करेंगे। While Pakistan has been witnessing economic challenges owing to its incompetent policies, the POK region, which is already marginalized, has been subjected to absolute brutality. Locals accuse that the economic losses faced by Pakistan due to policy paralysis are compensated from the illegally occupied territories of Gilgit-Baltistan and POK, and such policies of laying off employees or relegating them to ad hoc status is part of such design. Moving on, while inflation and load shedding has already battered the lives of people in illegally occupied Gilgit-Baltistan, the recent cut on wheat subsidy is just rubbing salt in their wounds.
People in various areas of the region have started demonstrating against this hostility of the government. Have a look. People in various towns of illegally occupied Gilgit-Baltistan, like Jutial and Khomar, have taken to the streets. Boiled over the subsidy cut on wheat, demonstrators have blocked the roads and are raising slogans against the government. They say that people were already suffering due to price hike on food items, and now the administration has dropped another bomb on them. Fed up with the false promises of ministers, they have warned the government to intensify their protest if they didn't roll back their decision. शमस ने कौमी इधर सूबाई असम्बली के अंदर बाकायदा इसने कहा था कि अगर आटा का कटौती हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हमारा फतुल्ला भाई भी इसी सैटेलाइट टाउन जुटियाल का बाशिंदा है, हमारा मिनिस्टर है हल्का 2 का, उसको भी चाहे था कि कब से रोड बना के आए, वो भी गायब है क्योंकि सूबाई हुकूमत नायल है। 98% तमाम एशियाई खुर्दनोश की रेटें बढ़ी है 300 गुना, आवाम ने बर्दाश्त करके बैठा था। अब एक आटे का सब्सिडी जो जुल्फिकार अली भट्टू का दिया हुआ था, तोहफा था, आज इस पर भी हमला हुआ है तो जियाले इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सूबाई हुकूमत को फिल फोर ये वार्निंग देते हैं, वार्निंग, कोई मुतालबा नहीं है, वार्निंग है। फिल फोर अगर ये आटे का कटौती ख़त्म नहीं किया तो सूबाई हुकूमत के खिलाफ भी और वफाकी हुकूमत के खिलाफ भी हम धरने देंगे। कल गिलगित का अमन मुतासिर होगा, हम ये नहीं चाहते क्योंकि गिलगित एक पुरअमन इलाका है, तो लिहाजा लोगों का सबसे दिराना मुतालबा रोटी, कपड़ा और मकान है। तो पहला सूबाई हुकूमत ने हमला किया है रोटी पे, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। Along with cut on wheat subsidy, demonstrators also highlighted the issue of load shedding. Even after having abundance of rivers and number of power stations, authorities have failed to provide the local residents of Gilgit-Baltistan with even 5 to 6 hours of electricity. Locals say that smart meters installed by the government have only led to hefty power bills, but the issue of power cuts is still unresolved. ये जो नए स्मार्ट मीटर्स लगाए गए हैं, ये स्मार्ट मीटर्स के बाद हमें कहा गया था कि आप 24 घंटे बिजली आएगी। अब वो 24 घंटे तो दरकिनार, दिन में 5 घंटे भी बिजली नहीं आती है। तो आवाम के साथ ज्यादती है। ये जो नए तरीके और नए वो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इंतहाई गरीब लोग हैं, ये इतने बिल्स पे नहीं कर सकते हैं। ये इस हिसाब से जो हमने मैक्सिमम हिसाब लगाया, हर घर में 7 से 8 हजार बिल आएगा, कहीं 10,000 का बिल आएगा, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के किसी भी शख्स ने ये बिल पे नहीं करना है। कल को हालात खराब होने से पहले ये नए मीटर्स वाला मामला हल किया जाए। Having reached saturation, the people of Gilgit-Baltistan have started demonstrating intensively against the corrupt practices of the government. However, Pakistan, on the contrary, has also ensured that people in this illegally occupied region continue to reel under its misrule that provides a life riddled with discrimination and misery. Next, we move on to Jammu and Kashmir, where houseboat owners are gearing up to welcome tourists during winter season. As the mention of Kashmir Valley remains incomplete without its colourful houseboats and shikaras, the owners are trying to leave no stone unturned in their preparation and are hopeful of good business this year. Have a look. Representing the 800-year-old heritage of Kashmir, houseboats have always remained a major draw for tourists in the valley. Though they are found in several parts of the country, but the one in Srinagar are unique in style and making.
They are mostly anchored on the banks of two beautiful lakes, Dal and Nagin, and Jhelum River in the heart of Srinagar. Ranging from D-grade to deluxe, different categories of houseboats can be found at these sites, and many of them are only accessed by the shikaras. They usually have a well-decorated drawing room, dining room, carpet-floored passage, luxurious bedrooms, and a balcony, providing a breathtaking view. Tourists visiting Kashmir love to stay in houseboats, as here they can find complete peace and tranquility. मैंने जब पहले हाउस बोट में रहने की सोचा था तो मुझे लगा था यहाँ पे पानी है तो टेम्परेचर काफ़ी लो होगा इन कंपैरेटिव अगर कहीं बाहर रहते हैं होटल लेके, लेकिन यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, एक तो प्राइवेसी है नंबर 1, नंबर 2 ठंड की वो टेम्परेचर डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं रहता है, फीलिंग कंफर्टेबल, और यहाँ का जो एम्बियंस है बहुत अच्छा है। खास करके मेरे को एक चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ की हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छे रहते हैं। यहाँ पे जो चाचा है, जो यहाँ की केयरटेकर है, दे आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। और सबसे बड़ी बात यह है खाने की। बाहर आप खाते हो ऑयली स्पाइसी होती है, यहाँ पे घर का खाना मिलती है, जैसे लगता है आप घर पे ही खाना खा रहे हो। एंड मैं यहाँ पे 2-3 दिन के लिए आया था तो मैं देख रहा हूँ कि आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल एंड एंजॉयबल। एंड यहाँ की जो स्पेशियस है, रूम काफ़ी स्पेशियस है, यहाँ पे हीटिंग सिस्टम प्रॉपर्ली है, मेंटेन है, रात को आपको सर्दी का महसूस नहीं होता है। रूम का टेम्परेचर वही 15, 16, 17 का लगता है जब बाहर की टेम्परेचर 1 डिग्री और माइनस भी जाता है तो, लेकिन रूम की टेम्परेचर मेंटेन रहता है 15 डिग्री में। तो फीलिंग गुड, अच्छा लगता है एंड एंजॉइंग द ट्रिप। As of now, the winter tourism season is about to begin. Houseboats too are getting a few changes done. Owners are making the heating arrangements and the bedding too is being given a shift so as to provide a cozy atmosphere to the visitors. They say that they have done all the preparations to welcome tourists during this winter season. हमें पता होता है सर, विंटर में क्या क्या फैसिलिटी टूरिस्टों के लिए होना चाहिए। हम एक तो वुडन फायर रखते हैं सर, यहाँ पे बुखारी जिसको कहते हैं सर। ऊपर से हम रखते हैं सर हीटिंग ब्लैंकेट्स रखते हैं, गर्म पानी का वाटर बोटल्स देते हैं सर। 24 आवर्स गर्म पानी होता है, चालू होता है सर। और उसके बाद में अगर टूरिस्टों के साथ ज़्यादा कपड़ा नहीं होता है सर, तो हमें पता है सर यहाँ पे विंटर है, कितनी सर्दी होती है सर। तो हम टूरिस्टों को, हमारे पास जैकेट्स होते हैं, फेदर के जैकेट्स होते हैं, वो स्वेटर्स होते हैं। जब उनको गुलमर्ग पहलगाम जाना होता है, हम उनको साथ में देते हैं सर। उनके लिए हम सफाई करके रखते हैं, या विंटर आने वाला है उसके लिए प्रिपेयर करके रखते हैं। हम गर्म कपड़े, जो भी ब्लैंकेट है वगैरह है, जो भी है गर्म के लिए, विंटर के लिए, वो हम रखते हैं। और टूरिस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि हाउस बोट में जो भी विंटर में सुविधा होनी चाहिए वो हम रखते हैं हाउस बोट में। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होती है टूरिस्ट को। The first recorded houseboat in Kashmir was registered in the late 1880s. It was said to be built for the Europeans by Pandit Narayan Bhan, popularly known as Nav-Naran. At present, there are around 900 houseboats stationed along the banks of the most beautiful lakes of Kashmir. Considering the importance of houseboats, the Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, Manoj Sinha, announced a new policy this year that permits houseboats to undergo renovation. Moreover, the Union Finance Minister Nirmala Sitharaman, during her recent visit to Jammu and Kashmir, also announced a Shikara scheme under which credit of up to 15 lakh will be provided for the purchase
and repair of shikaras and houseboats. The infrastructure development is in full swing in Jammu and Kashmir. Be it employment, health, education or tourism, Jammu and Kashmir is getting a mega developmental push in every sector. At present, Panchayat Ghars are being constructed across various villages in the Union Territory, both to strengthen the governance as well as to empower people at grassroots level. Let's take a look at the one being established at Udhampur's Narsu block. The locals of Narsu block in Udhampur will soon be having their own Panchayat Ghar where they can discuss all the Panchayat related work in that area. The construction work is in full swing and it is being built at an estimated cost of Rs 20 lakhs. Hailing the initiative, locals said that this was a much needed move as earlier the Panchayat meetings have to be conducted in the open and that becomes a problem during the unfavorable weather conditions. They even praised the government for their efforts to empower the people at grassroots level. इससे पंचायत की बहुत बड़ी समस्या जो वो हल हुई है, क्योंकि पहले जो पंचायत को अपनी मीटिंग करनी पड़ती थी, कोई ग्राम सभा करनी पड़ती थी, तो उसके लिए कोई जगह एक निर्धारित नहीं थी। कभी कहीं बैठना पड़ता था, कभी कहीं बैठना पड़ता था, कभी बारिश पड़ गई, कभी कुछ हो गया तो वो प्रोग्राम कैंसिल हो जाते थे। तो इस पंचायत घर बनने से पंचायत को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है और लोकल लोगों को रोजगार जो है वो भी मिल पा रहा है। देखिए, गवर्नमेंट का जो मकसद था कि जमीनी सतह पे जो है वो लोगों को पावर दी जाए, तो वो पंचायत के माध्यम से ही दी जा रही है। तो इस वक्त पंचायतें जो हैं वो ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इसी के माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, सड़कें बन रही हैं, रास्ते बन रहे हैं और बाकी जितने भी काम है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं। पंचायत घर होने की वजह से हमें बहुत सी परेशानियां आती थी। ग्राम सभा ठीक से नहीं हो पाती थी। दूसरा, हमारी अपनी कोई मीटिंग होती थी तो बैठने के लिए जगह नहीं मिलती थी। आज पंचायत घर बन रहा है तो बहुत सी समस्याओं का हल हो जाएगा और बहुत खुशी है हमें कि ये पंचायत घर जल्दी से बन जाएगा और हमारी समस्याएं हल हो जाएंगी। The construction work of Panchayat Ghar is taking place under Manrega in convergence with 13th Finance Commission. Around 20 to 30 local people are also getting an employment with its establishment. Earlier, they had to travel to other areas for work, but now they can earn a daily wage at their own village itself. हम पहले उधमपुर जाते थे काम करने के लिए, मतलब सभी जाते थे। अब हमें इधर काम मिल रहा है, बेरोजगार जो है तो इधर काम मिल रहा है, दिहाड़ी लगा रहे हैं। हमारे साथ को कम से कम 20 बंदे काम कर रहे हैं लेबर के। और जो हम पंचायत घर में जाते थे उधर बाहर बैठना पड़ता था। अब हमारा पंचायत घर बन रहा है तो हमें अच्छा हुआ, हम अंदर बैठ सकते हैं कि हमारा घर बन रहा है पंचायत घर, तो अच्छा है। धन्यवाद है गवर्नमेंट। प्रायोरिटी पे जो है वो हमने लोगों के साथ मिलकर लोगों का कॉपरेशन हमारे साथ रहा, तो हमने जो है वो ये काम जो है शुरू करवाया। ये 13th FC का काम था। इसमें 13th FC में नरेगा के कन्वर्जेंस में ये काम हो रहा है। पंचायत एक रेंटेड अकोमोडेशन में काम कर रही थी, वहीं से अपना ऑफिस चला रही थी। तो दिक्कतें तो आती थी उनको, क्योंकि पंचायत की जो भी मीटिंग होती थी तो उसमें काफ़ी परेशानियां आती थी उनको। लेकिन अब जब से ये पंचायत का काम शुरू हुआ है, अब जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद पंचायत की ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। जहां तक रहा कि कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो ये कन्वर्जेंस में जैसे मैंने आपको बताया, तो इसमें मनरेगा के वर्कर्स काम कर रहे हैं। हमारे कुछ 30+ वर्कर्स जो है वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो इसी पंचायत के हैं। तो वो लोग काम कर रहे हैं, उनको रोजगार मिल रहा है। As Jammu and Kashmir administration is committed to strengthen democracy at the grassroots level, infrastructural development in the form of Panchayat Ghars will definitely contribute to the cause. Next, we move on to our section of Incredible India, where today we will take you to explore the mesmerizing Konark Dance Festival of Odisha.
Held in the backdrop of Mehmet Sun Temple, the festival recently witnessed its 32nd edition. Along with it, the Konark city also hosted the 12th edition of the International Sand Art Festival, enabling visitors to witness both the brilliant showcase of art at the same time. Decked up with colorful lights and glittery artistic pieces, the way to the exquisite open-air auditorium situated in the backdrop of Konark Sun Temple was casting a magical spell on visitors. Popularly known as Natya Mandir, the auditorium is famous for playing host to the famous Konark Dance Festival every year. Jointly organized by Odisha Tourism and Odissi Research Centre since 1989, the 5-day cultural extravaganza aims to boost tourism in Konark along with preserving and increasing the reach of Indian folk dance forms. This time, amid the pandemic, authorities organized the festival with COVID-19 protocols in place. In spite of the COVID pandemic, state government has organized this classical dance festival this year with all the COVID protocols, and there is very good performances, and large number of guests have come from outside also to witness this festival. This is going on for several decades, and state government is continuing this tradition. The event saw some of the mesmerizing choreographies in classical dance forms of India, including Odissi, Kathak, Satriya and Bharatnatyam. A spellbinding performance was presented by a renowned choreographer Anita Sharma and her troupe from Assam. They performed Satriya, which is also pronounced as Hotriya and is highly devotional in character with a predominant spiritual aspect. The troupe amazed the spectators with its 8 dance recitals that were dedicated to Lord Krishna, like Krishna Vandana, Leela Govindam and Bhatima. I want to thank Odisha Tourism for inviting us to this beautiful, magnificent dance festival to perform our beautiful Hotriya tradition. And after the COVID-19, we performed first time in this big festival, and we artists always love to perform on stage in front of the audience, because we dance, we perform for audience only, and in land of Jagannath, we offer our dance today to Lord Jagannath, to Surya Devata. Another enchanting performance was presented by the students of a Bhubaneswar-based dance academy in Nupur. They were led by the eminent Odissi exponent Guru Niranjan Raut. The presentation saw Raut's choreographies on pure Odissi dance form Pallavi and Sunset to Tal Khemata and Tal Jati respectively. बहुत खुशी हुआ, बहुत मेहनत किए थे हम लोग किसी के लिए, और कोणार्क के सामने इतना ऑडियंस के सामने इतना ढेर सारे आर्टिस्ट के सामने परफॉर्मेंस करके बहुत अच्छा लगा. I've been coming here for the last so many years, and I've lost count also of the number of years. Every year I'm invited to attend this program. Last year also I was invited, but due to pandemic I refused their offer. But this time I could not stay back. The attraction of Konark Festival is so much that one finds it difficult to stay back. I think by far it is the best festival in India.
Alongside Konark Festival, International Sand Art Festival also captured the major attention of the crowd at Chandrabhaga Beach. Around 100 artisans from across the country participated in the festival and created sculptures on relevant themes like eco-tourism and environment. Today's theme is ecotourism. The main theme is actually it's a very good topic for today, and every day we keep changing the sculptures given on the topic. But today's thing is actually we have to save the nature so that people can understand how nature will be helpful. As we have seen, as we have been seeing the circumstances in the COVID situations where people are trying to construct and they are just forgetting how to restore the nature. So this is a very good topic. This is my second time that I've come visited this place. 10 years back also I had visited when they had organized for the first time, and I'm very happy to be invited here again, and I can see a lot of development has been happened. In these many years, both the Konark Festival as well as International Sand Art Festival have carved out a niche of their own in the country's annual carnival calendar by providing a wonderful opportunity to the budding artists to make their presence felt on the international performing arts arena. That's all we have for you in this week's episode. Till we see you next week, it's goodbye from the entire production team.